See, we are doing the subjunctive pattern also. If मैं कोई wish कर रहा हूँ, I'm wishing something. Je veux que, I want that. Now we have two type of present tense in French. One is simple present tense, and the one is subjunctive present tense. I want that. Je veux que you understand. Tu comprends. C'est clair. Now ici, par exemple, what is comprendre present tense? You tell me. Je comprends. Je comprends. Je comprends. C'est clair. Yes, sir. Now, what is subjunctive present tense? Je comprends. Que tu comprennes. Qu'il, qu'elle comprenne. Que nous comprenions. Que vous compreniez. Qu'il, qu'elle comprenne. This is my subjunctive present tense. So बोलो, je comprends. Je comprends. इसी का ही practice करना है आपको. You have to understand. Is it clear to you? Yes, sir. Now, Yes, sir. repeat after moi. Il faut que. Whenever there is obligation, one, whenever there is a wish, हम subjunctive present tense लगाएंगे. Whenever there is an obligation, il faut का होता है. It is important that obligation है. It is must that. ये बहुत जरूरी है कि obligation. वो भी case मेरा subjunctive है. Is it clear to you? For example, say, it is very important that you should come on time. You should come on time. Pen down, please. It is very important that you should come on time. What is my the verb? Tell me, team. The must. So yeah, yes. The verb is my verb to must. Say clear. Yes, sir. So, Now, what is the subjunctive present tense? Sorry, simple present tense. Je dois, Je dois. tu dois, Il doit. il doit, nous devons, vous devez, il, elle doit. donc, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि it is mandate. अब सबसे पहले it is mandate, that is il faut que, that's a phrase, il faut que. Il faut que is falling under the category of subjunctive. What is il faut que? That you should. Que je dois, क्योंकि क के बाद ही वाला subjunctive आएगा, लेकिन देखो मेरा phrase जो जा रहा है il faut que, तो the verb का subjunctive क्या है? doivent. Simple present tense क्या है? doivent. Doit. Après moi, que je dois, je dois, que tu dois, que tu dois, qu'il, qu'elle doive, qu'il, elle doit, que nous devions, que nous devions, que vous deviez, que vous devez, qu'il, qu'elle doive. qu'il, qu'elle doivent. It is very important. Pen down, please, in English, in a notepad. It is very important that you should come on time. I want that you come on time. Please listen to me very carefully. It is very important. Say Claire. And I want that. Say Claire, my team. Yes, sir. Tell me yes and no. Yes, sir. दोनों केसेस में क्या समझ आ रहा है आपको? अगर मैं हिंदी इंग्लिश में आपसे बात करूं, एक जगह विश है और एक जगह ऑब्लिगेशन है. क्लियर? Yes, sir. Wish and obligation fall under the category of subjunctive. Is it clear to you, my team? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear to you? Il faut que. Il faut que is what? It is important. It is mandate. Say Claire.
Tell me. Yes, sir. Yes, sir. Tu dois. Que tu dois venir is my verb to come. Tell me. अब यहाँ पे Yes, sir. verb लगा दिया हमने. क्यों? क्योंकि you should first verb आ गया, conjugate कर दिया हमने. Yes, sir. Yes, sir. Full verb. Que tu dois aller. एक मैं previous recording को convert करूँ एक second. Let me convert previous recording. Aller. Répétez après moi. Aller. Aller. Allah. Allah. Aller. Allah. Allah c'est-à-dire quoi? L'heure. We have hours also. Allah basically हम use करते हैं on time. That's a phrase. Allah Allah. Allah. time. L'heure क्या होता है? Hours time. Or Is it clear to you? Yes, So sir. il faut que tu dois venir à l'heure. ये समझ आया टीम आपको? Tell me. Yes, sir. yes, sir. If I will say I want that you come on time. अब टीम बहुत ध्यान से समझना टीम बहुत ध्यान से. What is my come? सबसे पहले come. Vanir is my verb to come. Tell me. Yes, sir. Vanir. Yes, sir. Vanir fall under the category of come. Say Claire my team. Yes, sir. Now what is my Vanir present tense? Tell me. Je viens. Je viens. Tu Tu viens. viens. Say Claire. Il vient. Yes, Yes, sir. sir. Nous venons. Vous Venez. 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 Il Il vient. Il vient. Vient. Now what is my subjunctive Vanir verb? Subjunctive Vanir verb. So I can say que je viens, que tu viennes, subjonctif. Je viens, V-I-E-N-S. Tell me, ma'am. Saloni, ma'am. What is Yes, present sir, tense? yes. Compare करते हैं present tense. चलो. Je viens. Que je viens, Tu present viens. tense. Tu viens, Tu viens. present tense. Il Il vient, nous vient. venons, vous venez, Venez. il Il vient. vient. Il यहाँ vient. पे क्या है subjunctive present tense में? क्योंकि subjunctive हमेशा क के बाद आएगा, but provided कि वो sense fulfill होना चाहिए कि जहाँ पे obligation है, wish है. क्लियर? अभी हम obligation wish की बात कर रहे हैं, इसमें और भी चीजें आती हैं. सबसे पहले obligation wish की बात करेंगे कि que je vienne, que tu viennes, qu'elle vienne, que nous venions, que vous veniez, qu'elle vienne. C'est clair, my team? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट में जो प्लूरल है il vn और प्रेजेंट का प्लूरल और सबजॉन्टिव प्रेजेंट का प्लूरल सेम है. इज इट क्लियर टू यू टीम? Yes, Okay, sir. sir. नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई विल से आई वांट दैट यू कम ऑन टाइम. je veux que, tell me team. Je Je veux que. veux You que, I go. want that. Okay. You come on time. What is that? Tu viennes. Tu tu viennes subjunctive. Tu viennes. Tu viennes à l'heure. C'est clair, my team? Tu viennes à Je l'heure. veux que tu viennes à l'heure. C'est clair. Yes, sir. Tell me, Yes, team. sir. Now, for example, if I will say, I want that you can understand the concept of my speech. It is very important that you should agree the point of view of author. Now team, listen to me very carefully. What if I want that? Wish कर रहे हो Je team? veux que. Yes, sir. Tell me. Je veux que up you can. Tu peux What is my comprendre? na why per? Per तो मेरा simple present tense है. Yes, sir. Subjunctive present tense क्या होगा? सबसे पहले बोलो simple present tense.
बोलो je peux, Je peux. tu peux, Tu peux. elle peut. Elle peut. C'est clair. Nous Yes, sir. pouvons, Nous Nous pouvons, pouvons. vous pouvez, vous Vous pouvez, pouvez. il, elle peuvent. Elle peut. elle peut. C'est clair. Now, what is my subjunctive present tense? Que je puisse, que tu puisses, qu'il, qu'elle puisse, puissions, puissiez, puisse. This is my subjunctive. Present tense क्या है हमारा? Simple present tense. Je peux, tu peux, mais ça बोलो. And subjunctive present tense. Que je puisse, que tu puisses, qu'il, qu'elle puisse, que nous puissions, que vous puissiez. टीम ये प्रैक्टिस करना है अब आपको. जब मैं subjunctive कर रहा था, when I was a student, a long back, 14 years back, when I was a student, 14 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं इसको कैसे प्रैक्टिस करता. मैंने पूरे subjunctive pouvoir verb को मैंने 100 टाइम्स लिखा था, उसका subjunctive. que je puisse, que tu puisses, qu'il, qu'elle puisse, फिर बोला था. प्रैक्टिस करना है ऐसे. जितना लिखोगे लैंग्वेज उतनी आएगी. मैं टेलिंग यू. आपको मैं क्या बोलता हूँ कि आपको मेरी जो रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं उसकी उसको लिख लिख के देखना. रिकॉर्डिंग्स को सुनो लिखो, सुनो लिखो. लिखने से लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ आती है. इज इट क्लियर टू योर टीम? Okay, sir. Yes, sir. सो बोलो que je puisse, que tu puisses, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il, qu'elle puisse. C'est clair, my team? Yes, sir. Yes, sir. C'est clair. Now, for example, if I will say, I want that you can understand the concept of the speech. Je veux que tu puisses comprendre. What is comprendre is to understand le concept de la parole. Parole भी क्या होता है आपकी speech? Speech. C'est clair? Tell me, team. Yes, sir. Yes, sir. So répétez après moi. Je veux que tu puisses comprendre le concept de la parole. C'est clair, my team? Yes, sir. Now, ici, it is very important. Il faut que. Subjonctif. Il est très important que. Subjonctif. Il est nécessaire que. Subjonctif. Is it clear to you, my team? Yes, sir. Yes, sir. Très, très, très nécessaire que. C'est clair, my team? Yes, sir. Il est très important que. Très. Très is very. Il est très important que. Il faut que. Il est nécessaire que. It is necessary that. C'est clair, my team? Yes, sir. So, répétez après moi. Il est Il est nécessaire que. nécessaire que. It is necessary that. If I will say, il est très, très, très important que. It is very important that. क्या English है हमारी? That you should. The tu doivent. Is it clear to my team? क्या अभी हमने que je dois, que tu dois, devoir, verb, subjunctive, Yes, sir. que tu dois. C'est clair, my team? Yes, sir. Que tu dois accorder. Que tu dois d'accord. Que tu dois accorder. What is accorder? Accorder is to agree. Que tu dois accorder avec. What is avec? Avec is with. Avec le point. Avec le point de vue. What is point de vue? Point de Point of view. the point of the view. Avec le point de vue de l'auteur, with the point of the view of the author. So, il est très important que tu doives accorder avec le point de vue de l'auteur. C'est clair, my team? Yes, sir. Yes, sir.
Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. What you understood? Now, for example, if you'll say, I want that you should do that so that we can justify. Very simple as normally. Team, listen to me very carefully. I want that, ठीक है, that's fine कि जहाँ पे हमारा विश आना है आपको पता है कि वो हमारा subjunctive है. Is it clear to you? Yes. Team समझ आ रहा है? But so Yes, sir. that जहाँ पे आप बोलो so that also, so that is what in French pour que is also fall under the category of subjunctive. Is it clear to you, my team? Yes, sir. Pour que, so that, pour que. So I want that je veux que, यही हमारा je veux que. Tell me, team. Yes. Tu dois faire. Tu dois faire ça. Faire is a verb to do and to make किया हमने. Yes, sir. Tell me, team. बहुत ध्यान समझना, team ये बहुत important है. Je veux que tu Sorry. fasses. Sorry to interrupt you, sir. I'm getting late. Me Last- too, sir. Because 1 hour तो एक बार दो, clear. So I have to make my kids ready for the school. Okay. Session recording में है. 2 मिनट ले लो Yes. बस. Okay. Je veux que tu dois faire ça pour qu'on puisse justifier. Pour que is so that. Pour qu'on, क्योंकि pour que is my so that. What is pour que? So that. Pour qu'on puisse justifier. चलो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. ठीक है चलो. Okay, I will share the recording. Okay. Okay, sir. Thank you, sir.